Freedom should not be something you have to demand. It's something you just naturally have, something that no one can take away from you. Let's celebrate. Happy Independence Day and good morning, everyone. Honorable Principal Ma'am, dear Hi, parents, Ganesh. teachers, Okay. and today, on the occasion of the 75th Independence Day, I extend my warm greetings to you all. On this day, our India became independent and our dream of living in an independent country came true. To begin our celebration, let's go to our school campus for the flag hoisting ceremony. I request you all to stand up for the national anthem as a tribute to our motherland. May all living beings live in harmony with nature and other forms of life. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंचांग सिंधु जय मराठा वंदे उत्तर हिंद हिमाचल उत्तर तरंगा तट शुभ नामे गावे तट शुभ शुभ गावे तट जय गाथा जय जय मंगल नाथ जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे The pledge is an oath that we take while we live in this country. It reminds us of our responsibilities towards our country and motherland. I request you all to stretch your right hand for the pledge. Pledge. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. सारे जहां से अच्छा हिंदू सिखा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिखा हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संत ही हमारा वो पासवान
Now, I would like to invite our principal ma'am, who's an inspiration to most of us, to say a few words. Welcome, ma'am. A very good morning to all of you on this auspicious occasion. It gives me great pride to address each one of you on this 75th Independence Day of India. We are proud Indians. And as we celebrate this Independence Day, we should not forget all the sacrifices that were done to get us freedom, that we could breathe in a free nation. Very recently, we even celebrated the Kargil Divas, which made us realize that how fortunate we are to have our armed forces, to have our army protecting us day and night. We must also not forget the sacrifices made by our forefathers to get freedom for our country. And today, we must celebrate this great nation by loving, caring, and helping our brotherhood. Every Indian citizen is our brother, irrespective of caste, creed, or color. And we must spread cheer, believe in humanity, and love our country by giving back respect to every person around us. My dear friends, this morning, my message to each one of you would be just as Pandit Jawaharlal Nehru had said, India's tryst with destiny, which began 75 years ago, has not yet been accomplished, and each one of us must strive to accomplish the dream of a nation where every boy and girl can walk freely without any fear of being condemned for anything, where every person has every meal that he desires, where every family is blessed with peace and happiness. So, with that, I wish each one of you a very happy Independence Day. Jai Hind. I now welcome our coordinator, Ms. Fatima Afroz, who will introduce our special guest for this morning, who has a special message for each one of us. Good morning, everyone. Wishing you all a very happy Independence Day. It's a great pleasure for me to introduce our guest for today, Lieutenant Commander Muhammad Usman bin Ali, who has served for 7 years in Indian Navy. He was in service during the years 1998 to 2005. We welcome you, sir. Good morning, everyone. I am Commander Usman from Indian Navy. 15th August comes and we all get the fever of patriotism. On this day, we touch all the aspects of our freedom movement. To the young minds and to our future generations, I want to ask them a very fundamental question. What are we willing to pay for our fundamental liberties? What is the price of freedom?
It seems like a straightforward question. The answer, however, is anything but simple. The desire for freedom has deep historical roots. You are all versed, very well versed, Indian in the Indian history of freedom movement. Not only in India, but throughout the globe in 20th century, freedom has been the battle cry of democracies and would be in future democracies around the globe. Someone advocated for four fundamental freedoms: freedom of speech, freedom of worship, freedom of want, and finally, freedom from fear. But what is freedom's price tag? Who pays the price? The cost is borne by individuals, institutions, and society at large by their blood. People sacrifice blood and treasure to achieve independence, as well as to maintain or defend it. For some, the cost may be perceived as too high. Sadly, some freedoms are lost, frittered away, or taken. Although we pay more in lip services than in deeds on all the Independence Day what we celebrate, these fundamental freedoms has been hard won around the world. They are also unavailable or at best exclusively limited privileges to the majority of planet's population. It is my fundamental belief that every person on earth should have the right to life, liberty, and to be on the pursuit of happiness. At the moment, this is not a universal view. In fact, a very basic freedom of health is at stake. Good health is increasingly threatened by the global pandemic. Indian government has managed better response than other governments by being the capital of vaccination production of the world. In the end, however, you young minds have to figure out if the various freedoms what we enjoy today in India is the price worth paying, and are the future generations ready to pay that price. This is something which you all will one day decide when you have the maturity. Till then, I would wish you to enjoy life as you are in the best phase of your life, which is the student life. Happy Independence Day to you all, and Jai Hind. Today, our heart is full of patriotism, and to express our feelings in few words, we have Fawaz Ahmed of grade 9 to deliver a speech on this auspicious occasion. आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी, शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, मैं सैयद फवाज अहमद आपके समक्ष स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस साल अपने प्यारे भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बनकर उभरा। इस दिन दिल्ली के लाल किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के झंडे को फहराया था और अपना चर्चित भाषण विद डेस्टिनी दिया था। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। दुनिया के फलक पर भारत एक स्वतंत्र देश बनकर जन्म हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में उन योद्धाओं जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और मंगल पांडे को भी याद किया जाता है। 15 अगस्त को हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। दोस्तों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे वीरों और वीरांगनाओं को कुर्बानी देनी पड़ी थी। अंग्रेजों का अन्याय और अत्याचार सहना पड़ा था। सचमुच आसान नहीं थी आजादी की जंग। जब सारी दुनिया सो रही थी, तब हमारा भारत आजादी की चिंता में जाग रहा था। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष तथा बलिदान के कारण ही आज हम गुलामी की बेड़ियों को तोड़ खुले आसमान में आए। भूल न जाना भारत माँ के सपुत्रों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद। Thank you, Fawaz. Your words were heart touching.
Mujib of grade 3 is now going to express his love for his country through a message. सुप्रभात दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से 75 साल पहले यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। इस दिन हम उन लोगों को याद करते हैं जो सिर्फ हमारे देश की आजादी के लिए जीते थे और उनकी वजह से हम आज आजाद हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा। जय हिंद। Thank you, Talha. Now we have a melody song sung by our teacher, Mr. Shailendra Prakash. मेरा कलमा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ आ हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। Thank you, sir, for that beautiful song. We owe our gratitude to our freedom fighters who gave their lives and made great sacrifices so that we could walk free today. I would now like to call Amar of grade 4 for a short message. मैं अमर कक्षा 4वीं का छात्र आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने कुछ विचार आपके साथ बांटना चाहता हूँ।
जैसा कि हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, लेकिन इस आजादी के लिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कई नेताओं और देशवासियों ने बलिदान दिया। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष भारत 74वां दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत महत्व है। ये एक मातृ दिवस है जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं। Thank you, Amar. India's freedom struggle was filled with characters that made a remarkable contribution towards our free nation. Moving on to our next performance, we have a role play of a few prominent personalities of free independent India. Wasn't that wonderful? Let's get an insight about the life of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, from Yahya Abdul Khalid. आदरणीय अध्यापक अथवा मेरे मित्रों, सुप्रभात। जवाहरलाल नेहरू एक महान व्यक्ति थे जो जीवन भर बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी याद किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वो बहुत मेहनती और शांत स्वभाव के थे। वो अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की, लेकिन वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और वहां से कानून की पढ़ाई की। इनके पिता मोतीलाल नेहरू शहर के जाने माने वकील थे। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन तथा इसी प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण आंदोलन में महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर नेहरू ने भाग लिया। वोटों की संख्या कम होने के बाद भी नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 की सुबह उनकी तबीयत खराब हुई तथा दोपहर 2 बजे उनका निधन हो गया। धन्यवाद। Thank you, Yahya. Coming up next is a poem recitation by Zayan of grade 3. ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंध झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहरा रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया।
वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धन्यवाद। Those words resonated within us the feeling of patriotism. Dance is an expression of joy and freedom. Coming up next is a patriotic dance performance by the students of pre-primary and primary. ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। पम 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 सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना। यार बाज हम चाल साज, हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। That was an incredible performance. Thank you. Truly patriotic. My love for my country, my love for my nation is worthiness. My love for my people is endless. All I desire for my country is happiness. We hope you all enjoyed and thank each and every individual for joining in our celebrations. I would like to end our program with a few lines quoted by Mahatma Gandhi. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. Thank you and have a pleasant day. Jai Hind.